People can't commit to a 15-year SIP but happily commit to a 30-year housing EMI. नैरेटिव ही वैसा है कि उसको तो मालूम है डे वन में 30 years देना ही है. Story of every household, stay away from LIC wale chacha. Oh, 100%. I so resonate. Real estate is a terrible investment. Still, Indian parents keep pushing their children to take loans to buy real estate. एक तो घर वालों का अलग ही प्रेशर है. हमारे पेरेंट्स हैं वो उस जनरेशन में हैं जिन्होंने देखा है कि रियल एस्टेट से बहुत पैसा बनता है. दूसरी चीज़ ये है कि रियल एस्टेट थोड़ा स्टेटस है ना. मेरे पास एक घर है वहाँ पे, कोई ऐसा बोलता है क्या मेरे पास वो HDFC बैंक का स्टॉक पड़ा है? Okay, तो पहला ट्वीट, a 5 CR home और a 5 CR investment portfolio, आप क्या पिक करते हैं? So you want to build a better lifestyle in India, you should buy the house. Investment portfolio lifestyle थोड़ी बनता है. To me, investing via NPS is a typical foops moment. What is a foops thing? It's kind of like oops only. Okay. So I'm gonna share and retweet this post because I agree to everything that you were saying. 100% valid. Everyone wants financial freedom until they have to pay for their own health insurance. तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी कर रहे हो और तुमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया ना, तुम्हारी लगने वाली है. तुम कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते. जो फ्लैशी चीज़ें खरीद के दिखा रहे हैं वही millionaires नहीं है. वही मिलियनर्स नहीं हैं. Wannabes है. If you refuse to see the problem with earning 8 to 9% returns on 10-15 year lock-ins, you need to educate yourself about finance. Damn. People can't commit to a 15-year SIP but happily commit to a 30-year housing EMI. नैरेटिव ही वैसा है कि उसको तो मालूम है डे वन में 30 years देना ही है. SIP में रोज वैल्यू दिखती है ना, तो रोज फिजिटी करना ही होता है कि अरे अच्छा इतना बढ़ गया तो निकाल लें. डे वन में माइंडसेट विल डिफाइन हाउ यू गोइंग टू इट. 15 साल की आप SIP भी करते हो, 15 साल का PPF भी करते हो, 15 साल का LIC भी खरीदते हो, 15 साल की प्रॉपर्टी भी खरीदते हो. बाकी कहीं नहीं देखते हो, खाली एक ही जगह देखते हो. Right. और जबकि इसमें नहीं देखना चाहिए, बाकी सब में देखना हाँ चाहिए. इसमें नहीं देखना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा बना के देगा. Why is vehicle insurance mandatory and life insurance is not? Oh, super. Vehicle is a machine. The law, the government says, क्योंकि वो मशीन है और अगर उससे किसी को भी हानि पहुंचती है, तुम एज अ पर्सन यू आर नॉट एट फॉल्ट, मशीन वॉज एट द फॉल्ट. गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि तुमको तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है. गवर्नमेंट ओनली कंपल्शन करती है थर्ड पार्टी पे, विच मीन्स तुम्हारी गाड़ी से अगर किसी को नुकसान हुआ उसका कंपल्शन है. तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस तो तुम अपनी मर्जी के लिए करा रहे हो. Oh. My father started an LIC policy for my brother in 2003. It has just matured 2 years back and now we're getting 20k in every 2 years for next 10 years and 1 lakh at the end of the 10th year. Story of every household, stay away from LIC wale chacha. Oh, 100%. I so resonate. Gone through this, been there, done that. Stay away from anybody who's trying to sell you insurance as an investment. Run away. How much time does it take to reach 1 CR portfolio? Mine took 7 years, 2 bull runs to achieve it. मतलब आप बहुत रिच हो तो आप 2 करोड़ से स्टार्ट करके आप एक साल में स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ बना सकते हो. मतलब कम कर सकते हो क्योंकि आपने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट किया. बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम इट स्टार्ट्स. बैंगलोर टेक में काम कर रहे हो तो शायद जल्दी बना सकते हो. जैसे 1 करोड़ बनाने के लिए भी आपको एटलीस्ट 30-40 लाख तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 4 or 5 years. और उसके लिए आपका मतलब महीने का SIP होगा करीबन 50 या 60 हज़ार रुपये. सो दैट इज़ अफोर्डेबल ओनली टू मे बी टॉप 1%. आपको कितना टाइम लगा था? मेरे को आई थिंक बहुत टाइम लगा था. मैंने तो काफ़ी जो अपना टाइम है पैसे अपने खुद के बिजनेसेस में ही लगाया था. खुद का पोर्टफोलियो बना हुआ था. आई थिंक आई ओनली इन द लास्ट 5 or 6 years I built my own portfolio. Otherwise all the money was in the business. Business only. How everyone can be financially free? Compound salary by 15% every year. Wow. Save 50% plus of your net salary. Invest 80% savings in equity mutual fund. बहुत कम लोग हैं जिनको 15% का इंक्रीमेंट मिलता है. आई थिंक अ बेटर थिंग इज जब आप नेगोशिएट करते हो ना नए जॉब के लिए, उस समय आप मल्टीप्लायर मांगो. इंक्रीमेंट इन्फ्लेशन से लिंक्ड होते हैं. अगर 4% है तो आपको 6% मिल जाएगा. बहुत अच्छा किया है तो 8% मिल जाएगा. पर जो मल्टीप्लायर मिलता है वो जॉब चेंज पे मिलता है. एंड दिस सेविंग्स ऑफ 50% ऑफ सैलरी मुश्किल हो जाता है. इफ यू कैन सेव 20%, आई थिंक यू आर डूइंग फाइन. People think that PF, PPF, EPF is an investment. Well, it's not. It's a ticket to losing your hard-earned money over time. If you refuse to see the problem with earning 8 to 9% returns on 10-15 year lock-ins, you need to educate yourself about finance. Damn. To an extent, I would agree. There are people who worship tax-free fixed income returns today. But of course, there's an older generation. I would say people who are like about 35-ish. For them, this applies.
If you are 35, 40 and if you are having a fixed income heavy portfolio, then you are in trouble because your retirement corpus will not be enough to beat inflation. But that doesn't mean I need to not have them at all. Fixed income for a long term is still an investment. Yeah. As long as it is in the right amount. Mutual funds saw outflows in large cap schemes, whereas in small and mid cap schemes, the inflow is consistent. Fund managers are constantly urging retail guys to put money in large caps, fearing correction in SMIDs. He's very right. Human beings are all following greed and fear cycle. तेजी में हम सब तेजी बन जाते हैं, यूफोरिक, और मंदी में सब छोड़ के नहीं करना, एफडी में चले जाते हैं. It should be counter cyclical. And particularly when I say retail investors, 99% of the time they should stick to large caps. Okay. On their own if they're doing DIY investors. Because small cap में झटका भी जोड़ का लगता है. तो आप उनको कितना भी समझा लो लास्ट 4 साल में, बिकॉज देव सीन वन वे राइड, दे थिंक ये हमेशा होते रहेगा. Real estate is a terrible investment. Rental yields often less than fixed deposits. Rental income taxed at full tax rate, highly illiquid, requires regular maintenance investment even if used. Still, Indian parents keep pushing their children to take loans to buy real estate. एक तो घर वालों का अलग ही प्रेशर है. हमारे पेरेंट्स हैं वो उस जनरेशन में हैं जिन्होंने देखा है कि रियल एस्टेट से बहुत पैसा बनता है यहाँ पे, क्योंकि 90s और 2000s का जो बूम था ना, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, अगर वो प्रोजेक्ट बन चुका है ना, वो प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और अगर नहीं बन चुका है और सिर्फ लैंड है, वो और ही बढ़ चुका है प्राइसेस. उनके माइंड में अभी जब मैं देखता हूँ 10 का 100 हो गया है और 100 का फिर 90 भी हो गया ना, मैं लगा 10 का मैंने लिया था, अभी 90 है, अभी भी बहुत पैसा है. तो बच्चे को बोलते हैं कि खरीदो खरीदो खरीदो. दूसरी चीज़ ये है कि रियल एस्टेट थोड़ा स्टेटस है ना. मेरे पास एक घर है वहाँ पे, कोई ऐसा बोलता है क्या मेरे पास वो HDFC बैंक का स्टॉक पड़ा है? वैल्यू सेम होगा शायद से, ठीक है, पर बोलने में वो एक फ्लेक्स है. थर्ड पार्ट ऑफ सोसाइटी इज कि घर आ जाता है, आपके ऑप्शंस इन द मैरिज मार्केट बहुत बढ़ जाते हैं. विदाउट अ हाउस, बैचलर, इन 1 year ही मेट सम 22 गर्ल्स फॉर मैरिज. एक बार घर आ गया ना और वो प्रोफाइल में वो हाईलाइटेड था, वो 22 became 122. 122. Everyone wants financial freedom until they have to pay for their own health insurance. तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की तैयारी कर रहे हो और तुमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया ना, तो तुम्हारी लगने वाली है. तुम कभी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते. आई गिव यू माई डैड्स एग्जांपल, 23 lakhs, 17 days of hospitalization, all financial freedom gone for a toss. Financial independence usually takes 2 decades of work, aggressive savings, prudent investing, and living below your means. एक किताब आई थी द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, वेयर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स वर ट्राइंग टू सी कि ये जो मिलियनर्स होते हैं उनकी लाइफ्स कैसी होती हैं. तो उन्होंने कांटेक्ट किया और एक होटल में उनको बुलाया जस्ट फॉर अ मीटिंग. फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे लोग आए. सेकेंड हैंड कार्स थी, स्टोर बॉट जैकेट्स एंड ड्रेसेस थी. दे वर द मिलियनर्स. जो फ्लैशी चीज़ें खरीद के दिखा रहे हैं वही मिलियनर्स नहीं है. वही मिलियनर्स नहीं हैं. वॉनबीज है. 20 साल काम करने के बाद कुछ दिखना शुरू होता है. ओके. एवरी यंग जनरेशन देन लर्न्स ओवर टाइम दैट जल्दी में नहीं होता है. ब्लिंकिट ज़ेप्टो की आदत लग गई है आई थिंक. हाँ, तो वो फाइनेंसेस में नहीं होता है, करियर में नहीं होता है. यू विल बर्न आउट. A 5 CR home और a 5 CR investment portfolio, आप क्या पिक करते हैं? If you want to build a better lifestyle in India, you should buy the house. Investment portfolio lifestyle थोड़ी बनता है. You want to build a lifestyle tomorrow, then you should do the investment portfolio. #YOLO. If your annual rent exceeds your 2 months salary, you're in the wrong apartment. I'm a believer you should pay 20-25% of the amount in that way. But I think in major markets, you will be in the right apartment if you are young, but wrong apartment if you are old. There's no point Arunama going and staying Bangalore airport के आगे. हाँ. You want to be wherever, Whitefield, जयनगर, बेलंदूर, जहाँ पे कुछ लाइफ है ना. आप बोलोगे कि नहीं मैं इतना दूर जाऊंगी, पैसा बचाऊंगी और पैसे जेब में आ गए, I'll shift and own a home. But your life is gone in that ना, your youth. Unpopular opinion, retail investors will research hundreds of active mutual funds only to get lower or at par index fund returns. Absolutely, I can't agree more with this. सही में? Yes. Analysis paralysis जिसको बोलते हैं. You know, investing is not a high IQ game. A person with an average IQ can easily beat a person with a higher IQ as far as investing is concerned. Investing is more a temperament game. So investing is about 1% intelligence, 99% temperament. Please correct me if I'm wrong. There is no way to reach early retirement through investment returns. Every return is trivial. Only ways to make enough money by building businesses or owning a large enough equity. So not everyone is built to be an entrepreneur. I have known people in the corporate sector who've built immense wealth
because they were both husband and wife in leadership jobs. Sometimes I feel that also when people say that the only way to build wealth is startup, थोड़ा misleading है. क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना पड़ता, डबल काम करना पड़ता है. आउट ऑफ 100 आई थिंक 95 स्टार्टअप्स तो फेल हो जाती हैं ना. 5 जो सर्वाइव करते हैं वो दिखते हैं. Rad insurance idea. Most folks take term insurance till age 65. They live till 65 and premium is gone. Instead, take insurance to the age of 85. If you're living in a tier 1 city, you won't last that long. When you die, the payoff is like an FD of 7-8%. You're welcome. I think I'll completely disagree. अच्छा. क्योंकि आप जब 65 से 85 कर दोगे इंश्योरेंस के लिए तो प्रीमियम बढ़ जाएगा. जो डिफरेंस है 65 के प्रीमियम में और 85 के प्रीमियम में, अगर उसको इन्वेस्ट कर दो, यू विल डेफिनेटली मेक मोर देन 7-8%. Basics of portfolio diversification: don't put more than 12% in any single stock. Don't put more than 40% to single industry. 40% allocation. Keep minimum 15 to 18 stocks in portfolio. Maximum trading capital is 15% of overall capital. Keep 5% in SGB, 10% in global equities. What do you think? काफी It's good. It like बैंगलोर में थाली मिलती है ना, थाली उसमें पता है कि थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा वो हाँ, थोड़ा वो. तो आप कह सकते हो कि वो है. होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में देखो मेनू, आपको जो अच्छा लगे. आपको 4 स्टार्टर खाने को, मेन कोर्स खाने नहीं है, कुछ लोग उसी में खुश जाते हैं. इट्स अ गुड फिलॉसफी कि ठीक है, आपको स्टार्ट करना नहीं आता तो ये चीज़ रखो आप. चलो thumbs up मिल गया ऐसे तो. Anyone who purchased real estate in India over the last 2-3 years should be fairly happy right now. Going forward, the interest rates are likely to come down. Plus, over the next 1-2 years, people will have more discretionary income. EMI payments will come down. Moreover, inflation is likely to go up in our economy. This means rents will increase, which would lower the impact of EMIs. This has a making of another real estate rally, at least for the good real estate. वेरी amateurish व्यू. 2-3 साल में अगर आपने लिया है तो जो प्राइस अप्रिसिएशन आपको मिला है, दैट इज द मेजर थिंग. ठीक है, EMI payments will anyway come down because as you go more in the tenure of a loan, you'll be paying more of the principal and setting it out. EMI payments come down क्योंकि average repayment of a loan in India is 7 to 8 years. तो 20 साल का आपने लोन लिया है पर 7-8 साल में आप प्रीपे कर देते हो, तो EMI will anyway come down. मुझे लगता है कि rents will now stabilize and some markets start falling. I've seen real estate brokers, mutual fund distributors, land flippers, and antique collectors build serious wealth, but not a single person who got rich just by doing SIPs. Make of that what you will. No, I don't agree with this. I'm also a mutual fund distributor, but I'm a first mutual fund investor. ठीक है, आज मैं 30 लाख डाल रहा हूँ, सब लोग उसकी बात करें, दैट आई हैव मेड थ्रू दिस थिंग, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट जो मैंने पहला 10,000 डाला उसका भी तो 1 करोड़ बनने वाला है. तो वेल्थ बनी है ना. Correct. तो अगर मैं वही 50,000 डालता तो आज 5 करोड़ भी बन सकते थे. My entire wealth has the CAGR, whatever has because of these SIPs have created wealth. So multi-bagger सब कुछ बनते हैं, but you have to give time. A lot of people want NPS as an alternative to EPF for retirement. NPS, for all its lucrative entry and exposure to equity, has its own issues. One, you can't withdraw the entire corpus. 2, 40% of your corpus goes into an annuity plan. Annuity returns are pathetic. 4, annuity pension is 100% taxable. And 5, since 40% of your corpus is never accessible to you, liquidity becomes an issue. To me, investing via NPS is a typical FOOPS moment. What is a FOOPS thing? It's kind of like oops only. Okay. So, July 2013, the rupee crashed. RBI had to increase interest rates by 2%. That resulted in a bond crash. My NPS returns before that crash was 11ish, almost 12ish%. And that overnight it dropped to 7. My Just like God. that. It's a huge dump. That's when the NPS authorities realized that you can't afford such issues when the guy is going to retire. For example, if the guy had to retire next month, and this kind of a huge crash would be a problem. So they started staggered withdrawal rules. Now you can shift your annuity purchase from age 60 to 75. Let's say you are of good health, reasonable health at age 60. You can push your annuity purchase to 75. At age 75, you will get a very good deal because the insurers expect you to die soon. So they are willing to give you a better interest rate. When I was age 34 or 35, when I started my first retirement calculation, I thought, no, I don't need a pension. I can just, withdraw from my corpus and manage. But as I age, I realized that stable income is necessary. Don't make these mistakes. Treat house as an asset, buy LIC plans as an investment, avoid term insurance due to no return, invest in FD in small banks for 1 to 2% extra, participate in chit funds for regular cash flow, give loans to friends expecting it to come back, I agree, and buy penny stocks hoping to be a millionaire. I'm gonna share
and retweet this post because I agree to everything that you were saying. 100% valid. 100%. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.